दिख रहा है ना सब बच्चों को? Okay, so we can start now. So our chapter is crop production and management, class 8, and we are studying the question answer of this chapter. So let us look at question number 1. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. So we have some fill in the blanks and we have some words like this. These are the words float, water, crop, nutrients. Okay, by using these words, we have to complete these fill in the blanks. So let us see first question. The same kind of plants grow and cultivated on a large scale at a place is called dash. Crop. So Crop. right answer. Answer is right. कि जो सेम काइंड ऑफ प्लांट हम ग्रो करते हैं ऑन अ पीस ऑफ लैंड, इट इज कॉल्ड एज ए क्रॉप. Similarly, look at question number 2, B part. The first step before growing a crop is dash of the soil. Preparation. So before growing a crop, we should prepare the soil. Okay, then C देखिए. Preparation of the soil. Damaged seeds would dash. पहले नहीं बोला, ठीक है? Don't speak before I speak. Okay, so damaged seeds would dash on the top of water, so it will float. Float. Okay, तो जो generally, yes, so generally जो seeds damage होते हैं ना, वो खोखले रहते हैं, so that's why they float on the water. Then come to question number D. For growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential. Water and So firstly, nutrients. Water and nutrients. you know that water is required. We have read it in irrigation. Secondly, nutrients, sodium, potassium, okay, magnesium. These are the nutrients. So these are also required. Okay, we know that in fertilizers, sodium, phosphorus, potassium, ये सब होता है ना fertilizer में. So note down all this in your notebook. You have to write this in your notebook. नीचे देखिए आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है? In case of any doubt, you can always see. And do not make any spelling mistakes while writing. ठीक है? Special care should be taken because if you make spelling mistakes, then in exams also, your answers will be wrong. Now let us see second question, which is match the column A with column B. So in column A we have Kharif crop, Rabi crop, Sir, E, paddy and maize. organic manure. Okay, similarly. So let us try to match it. First, Kharif crop. Sir, Kharif paddy crop and कौन maize. सी होती है? Sir, paddy and maize. Sir, paddy and maize. Yes. Okay, Kharif is paddy and maize. And what about Rabi? Sir, wheat, gram and pea. Bees Okay. are growing. Sir, wheat, gram Okay. and peas. Okay, ठीक है. And what are the chemical fertilizers? Sir, B. B is urea and Sir, urea super and phosphate. super phosphate. And what is organic manure? Sir, C. Manure. So animal Sir, C. excreta. Sir, होगा ना animal ये सब होता extra, cow है. Okay, dung. okay. And plant waste. So here we have. Let us check our answers. Kharif crop are paddy and maize. Rabi crops are wheat, gram, pea, and chemical fertilizers, urea and superphosphate. Organic manure or animal excreta, cow dung, and urine and plant waste. So whatever waste can be converted into organic manure. ठीक है? So we also prepare in our school compost बनाते हैं ना? Compost जो गड्ढा खोद के उसमें सारा वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं, फिर 1-1.5 महीने के बाद निकालते हैं, तो वो सारा मैन्योर बन जाता है. दैट इज ऑर्गेनिक मैन्योर. इसके अलावा आप काउ डंग वगैरह भी यूज कर सकते हो उसमें, पत्ते और पेजेस. ओके, इस वेजिटेबल वेस्ट, इस तरह की चीजें. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, which is difference between, we have to write about Kharif crop and Rabi crop. तो Kharif crop, you know that जो इसमें पैडी आता है, मेज आती है, और रबी में वीट और ग्राम आते हैं because they are grown in the colder seasons. Okay, now question number 4, write a paragraph in your own words. So these are the topics.
preparation of soil. Then sowing मतलब sowing of seeds. Weeding मतलब removal of weeds. Threshing मतलब separating the seeds from the chaff. So preparation of soil में there are different steps like plowing, okay, then loosening the soil, all this. So this preparation of soil is the first step before growing the crop. It helps to turn the soil and loosen it to allow the root to penetrate deep into it. क्योंकि जब हम soil को प्लॉइंग कर रहे हैं, उसे खोद रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर से चाहे हल से, तो हम उसको लूज कर रहे हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन जाए. कल को जब हम प्लांट लगाएंगे तो उसकी जड़ें आसानी से उसमें एंटर हो जाए. दैट इज वाई. ओके, फिर देयर आर सम एनिमल्स, certain organisms that also like earthworm, microbes, they also help the soil to enrich it with humus and essential nutrients. So all this you can write in this short note. Okay, this all you can write. Similarly, sowing may write only one or two lines. Sowing is the process of putting the seeds into the soil for growing crop. We need to use quality seeds for sowing, and sowing is done manually or with the help of equipment like seed drills. Okay, so this is how we can do it. This much is enough. Now come to the third, weeding. So yeah, let us start it from here. These undesirable plants are called weeds, and farmer use many ways to remove weeds. Methods to control weeds are tilling, physical removal, uprooting, and cutting them. So we can use chemicals. So write this complete. Write it completely, okay? This all can be written. Now let us move on to the fourth topic, which is threshing. Threshing, we know it is a process of separating grains or seeds from the chaff. It is done by after the harvesting of crops, and we use a machine nowadays called combine, or earlier it used to be a thresher. So this is all this we can write here. Okay. So question number 5 is no need to done. No, there's no need to do question number 5 because we already have written it in our notebook. ठीक है? Write only question number 5 and mention that its answer is on page number that जहां आपने लिखा हुआ कॉपी में. बार-बार there is no need to repeat. समझ में आ गया सबके? Okay, sir. हाँ, yes. Yes. Now come to question number 6, which is irrigation. What is irrigation and describe two method of irrigation which conserve water. वैसे तो ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि इरिगेशन इज वाटरिंग द क्रॉप्स और मेथड्स कौन से हैं, स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन. ठीक है, ये दो हमने करे हैं. लेकिन लेट अस राइट अबाउट लिटिल बिट. सो शॉर्ट में करेंगे. सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स, यानी कि जब चाहिए, दैट इज इरिगेशन. एंड टू सिस्टम आर two methods of irrigation which help in conservation of water are: number 1, sprinkle system. So sprinkle system mein write only this much. In this method, water is supplied using pipes to one or more central locations within the field, and water is allowed to flow under high pressure with the help of a pump. It gets sprinkled on the crop. तो फवारे की तरह पानी हर जगह फैल जाता है. ड्रिप में यू नो इट, साथ में डायग्राम भी ड्रॉ करना है, बस ये नहीं कर लिया हमने ऑलरेडी, तो देयर इज नो नीड टू ड्रॉ नाउ. बट जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तब ड्रॉ करना है. ठीक है, दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन एज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल. सो दिस मच वी कैन राइट इन आवर नोटबुक. Come to question number 7. If wheat is shown in the Kharif season, what would happen? So wheat जो है, it is a Rabi crop.
अगर खरीफ के सीजन में लगा देंगे तो क्या होगा, तो वो उगेगी नहीं, फिर नहीं उगती है। ठीक है, वीट को होने के लिए थोड़ी ठंड चाहिए, थोड़ी सर्दी में होती है ये ऐसे नहीं होती है, गर्मी में नहीं होगी। इफ wheat is sown in the kharif season, then the whole crop might get destroyed because of lack of temperature, adaptability, availability of pest, etc. ठीक है, तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे इसमें फिर। तो दैट इज वाई पीपल डोंट डू नॉट सो wheat crop in the kharif season. It will get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability of pest, etc. So write only this much. Let us now move on to question number 8. Explain how soil get affected by the continuous plantation of crop in the field. So अगर हम soil में continuous plantation यानी कि एक फसल हो गई, फिर दूसरी फसल, फिर तीसरी फसल, फिर चौथी फसल लगाते जाएंगे तो क्या होगा? तो सर वो सॉइल बनते रहेगा। हाँ, सॉइल खराब हो जाएगी, सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सॉइल को भी आराम चाहिए। इफ कंटिन्यूस प्लांटेशन of crop is done in the field, then the soil will become poor and necessary nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, etc., which are required for the proper growth and functioning. So this all okay, तो we are not writing this much, हम सिर्फ इतना लिखेंगे। When a farmer continues to grow crop one after another, then all the nutrient available in the soil reduce and the crop yield decreases automatically. ठीक है, now come to question number 9. What are weeds? How can we control them? You know this. Weeds are unwanted plants that grow in the field. इतना ही करना है। Weeds, जो मैंने येलो में लिखा है बस वही करना है। Weeds can be controlled by using weedicides. ठीक है, and weedicide is a chemical which is sprayed in the field to kill the all available weeds. Weedicides are not harmful to the crops. क्रॉप को डैमेज नहीं करता है, लेकिन जो प्लांट्स उसको फसल में उग रहे हैं छोटे छोटे वीड्स, उन्हें इट डिस्ट्रॉयज देम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट, कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, सो यू हैव टू rearrange these boxes. Answer is already given here, but you have to do it by yourself. Try doing it, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपको नॉलेज है अभी। ओके, सो देयर इज आल्सो क्रॉसवर्ड हेयर, ये बच्चों के खेलने के लिए होती है, सो यू कैन ट्राई प्लेइंग विद इट। कैसे खेलते हैं आपको पता है ना, वर्ड गैस करने होते हैं इसमें, जैसे नंबर पे कौन सा आएगा, इतना लंबा डब्ल्यू से कौन सा वर्ड इतना लंबा है, तो इस तरह से इसको कोशिश करिए भरने की। हाँ, ओके, कर सकते हो। यस सर। Yes, sir. ट्राई करना। और एक जो मैंने आपको बोला हुआ है, यू हैव टू ऑलवेज डू व्हाट यू हैव टू डू ऑलवेज। क्या काम दिया हुआ है मैंने? सो यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी, सेल्फ रीडिंग। करोगे कि नहीं करोगे?